First take a new source file, then add the header files hash include stdio.h, then hash include conio.h, then hash include math.h. math.h हेडर फाइल में हमारे वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस इंक्लूड होते हैं. देन ऐड द मेन फंक्शन. Take two variables of integer data type, that is int a and square root. ए वेरिएबल उस नंबर के लिए जो हमें एंटर करवाना है, जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट वेरिएबल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए. एंड देन ऐड प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो नंबर हमें एंटर करवाना है उसके लिए एंटर एनी नंबर. देन ऐड स्कैनफ फंक्शन, %d जो हमारे एक डेसिमल इंटीजर को डिनोट करता है, एंड %a जो हमें ए वेरिएबल का एड्रेस देगा. यहाँ पर हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बिल्ट इन स्क्वायर रूट मेथड का यूज़ करेंगे. देन ऐड द स्क्वायर रूट वेरिएबल जिसमें हमें रिजल्ट स्टोर करना है. देन ऐड बिल्ट इन फंक्शन sqrt, then pass the a variable in parentheses, then add printf function. Square root is %d और जिस वेरिएबल में हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है स्क्वायर रूट का, दैट इज स्क्वायर रूट, then semicolon. Now save the program with .c extension and execute the program. Enter any number 25, then square root is 5. Then enter any number 121, then square root is 11.